See what is given in question number 9. Mukesh, Dhaval and Vinod are partners of the partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? There are three partners, Mukesh, Dhaval and Vinod. Their capital proportion, underline the word capital proportion. Underline the word capital. See, this proportion is capital ratio 4:2:3. You know there are two types of ratio. One is the profit and loss sharing ratio and other is the capital ratio. You know that profit and loss ratio, profit must be distributed. Profit or loss must be distributed in profit and loss ratio, not in the capital ratio. Here it is given to confuse you. Capital ratio is totally useless. So always read the question carefully and underline the word capital proportion. So this ratio 4:2:3 is given to confuse you. It is not profit and loss ratio. Okay. Dhaval and Vinod. Dhaval and Vinod, second and third partner, has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000. Dhaval and Vinod given assurance to Mukesh that he will get rupees 35,000 from the profit. From the profit, he will get 35,000 from the profit. The profit of the firm of the year is rupees 90,000. Total firm's profit is given 90,000. How would you distribute the profit among the partners? Here it is given in the question that धवल और विनोद ने गारंटी दी है, एश्योरेंस दिया है मुकेश को कि तुम्हें प्रॉफिट में से 35,000 मिनिमम मिलेंगे, प्रॉफिट में से कम 35,000 मिलेंगे. तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि एज पर देयर रेशियो व्हाट अमाउंट दे आर गोइंग टू गेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक एज पर देयर रेशियो व्हाट अमाउंट दे आर गोइंग टू गेट. So total profit is given 90,000. So first of all we give the heading. First of all we give the heading distribution of profit. Distribution of profit. Three partners, Mukesh, Dhaval, Vinod. Mukesh, Dhaval, Vinod. Total profit 90,000. Now this 90,000 we distribute in profit and loss sharing ratio. See, as in question, profit and loss ratio is not given. The ratio which is given, that is capital ratio, not the profit and loss ratio. And we know capital ratio is totally useless. In capital ratio, you can't distribute your profit and loss. So we will read the question. Is there any profit and loss ratio given? No. As profit and loss ratio is not given, so we must distribute equally. We know the rule of 1932 Act. If profit and loss ratio is not given, distribute the profit equally. So as there are three partners, we distribute the profit equally. Equally means 1/3, 1/3, 1/3. 90,000 into 1/3. Mukesh, 90,000 into 1/3. Dhaval, 90,000 into 1/3. Vinod. So Mukesh will get 30,000, Dhaval will get 30,000, and Vinod will get 30,000 from the profit. As per the profit and loss distribution, as per the equal distribution, Mukesh is going to get rupees 30,000, Dhaval also 30,000, and Vinod also 30,000. But Dhaval and Vinod means second and third partner. Dhaval and Vinod, it is given in the question, has given assurance, means guarantee, that he will get rupees 35,000. Dhaval and Vinod given guarantee to Mukesh that he will get 35,000. But as per their ratio, Mukesh is getting 30,000. So Mukesh partner is getting less amount 5,000. गारंटी के हिसाब से, एश्योरेंस के हिसाब से देखने जाएं तो धवल और विनोद ने जो गारंटी दी थी, मुकेश को, तो 35,000 की गारंटी दी थी, लेकिन हमने प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सिर्फ उसे कितने मिल रहे हैं, 30,000, यानी कितने कम मिल रहे हैं, 5,000 कम मिल रहे हैं. एक्चुअली एज पर एश्योरेंस he should get 35,000, but as per the profit and loss ratio, Mukesh is getting 30,000, so he is getting less 5,000 rupees. So that amount is known as deficit amount. जितना अमाउंट उसे कम मिल रहा है उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं deficit amount. So we calculate the deficit amount 35,000 minus 30,000. 35,000 as per the assurance, and he is getting 30,000. So he is getting 5,000 rupees less. So this amount is 5,000 is known as deficit amount. Now deficit amount will be paid by the partners who have given the assurance. अब ये जो 5,000 कम मिल रहे हैं मुकेश को, वो कौन पे करेगा, जिन्होंने एश्योरेंस दिया है, जिन्होंने गारंटी दी है. गारंटी दी है धवल और विनोद ने. सो धवल एंड विनोद will pay that 5,000 rupees. जितना अमाउंट उसे कम मिल रहा है एश्योरेंस के अकॉर्डिंग, वो अमाउंट पे करके देना पड़ेगा वो पार्टनर्स को
जिन पार्टनर ने एश्योरेंस दिया. So Dhaval and Vinod will pay. So we give the heading distribution of deficit amount between Dhaval and Vinod. Distribution of deficit amount between Dhaval and Vinod. See, 5,000 rupees is the deficit amount. So this amount we distribute between Dhaval and Vinod. As this amount we are going to distribute between two partners. So 1/2, 1/2. तो धवल को पे करने पड़ेंगे 2500 रुपीज और विनोद को भी पे करने पड़ेंगे 2500 रुपीज. 5000 अमाउंट जो डेफिशिट है, जितना कम मिल रहा है मुकेश को, वो किसको पे करना पड़ेगा? धवल और विनोद को, क्योंकि धवल और विनोद ने उसे एश्योरेंस दिया था कि प्रॉफिट में से तुम्हें 35,000 मिलेंगे, पर उसे 35 नहीं मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं. कितने कम मिल रहे हैं? 5000. सो 5000 इज द डेफिशिट अमाउंट. तो ये डेफिशिट अमाउंट पे करना पड़ेगा जिन पार्टनर्स ने उसे एश्योरेंस दिया था. किसने दिया था एश्योरेंस? धवल और विनोद ने. सो 5000 रुपीज वी डिस्ट्रीब्यूट in Dhaval and Vinod equal proportion, as the profit and loss ratio is not given, and we are going to distribute between two partners. So 1/2, 1/2. So Dhaval will pay 2500 and Vinod will pay 2500. Okay, now final net distribution of profit. In the last step we will see net distribution of profit. Last step में हम लोग देखेंगे कि finally कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला. So we give the heading net distribution of profit. So write down the name Mukesh, Dhaval and Vinod. Mukesh को मिले थे 30,000 प्लस 5,000. जो डेफिशिएंट अमाउंट था वो धवल और विनोद उसको पे करेगा. सो नाउ मुकेश विल गेट 35,000 एज पर द एश्योरेंस, बिकॉज ही गॉट द एश्योरेंस, ही गॉट द गारंटी फ्रॉम धवल एंड विनोद. सो डेफिनेटली ही विल गेट 35,000. तो पहले उसे मिल रहे थे 30,000, अब 5,000 धवल और विनोद ने दिए तो उसके हो गए 35,000. सो नेट अमाउंट ऑफ मुकेश इज 35,000. धवल, earlier Dhaval was getting 30,000, but out of 30,000 he is giving 2,500 to Mukesh. अपने प्रॉफिट में से 2,500 वो मुकेश को दे रहा है, क्योंकि उसने एश्योरेंस दिया था उसे, तो उसे ही पे करने पड़ेंगे. तो 30,000 में से 2,500 उसने मुकेश को दे दिए, तो बाकी नेट अमाउंट धवल को मिला 27,500. विनोद भी सेम, विनोद को भी पहले मिल रहे थे 30,000, उसमें से उसने 2,500 दे दिए मुकेश को एज पर द एश्योरेंस, तो अब विनोद को भी मिलेंगे 27,500. सो नेट मुकेश इज गोइंग टू गेट 35,000, Dhaval 27,500 and Vinod 27,500.